Hero of the 2020. Rude rain interruption curtailing the third T20I, but with the two teams being tied on DLS at the time of the stoppage, India sealing the series 1-0. Hello and welcome to Hero of the Match. I am Megha and joining me in the studio are Jaya Sharma, former Indian cricketer, and Rakesh Rao, senior sports journalist. Welcome to the show. Thank you. Pretty Thank you. anticlimactic. Of course. Not the best way to end, but what can we do? It happens. We have been seeing this in the World Cup as well. But yeah, I mean, very disheartening for the fans. And very unusual as well because DLS tied doesn't happen always for whatever reasons. Yeah, it's very unusual. Yes. And I mean, Indians got that 75th run of the last ball of the 9th over. So, that was just touch and go. Because I remember from the commentary position, Harsha saying that we are one run short. And then they got that single of the last. So, yeah, just about made it. But there is another way of looking at it. That one run which was saved, if you remember, that was early in the Indian innings where it was replayed and checked a few times. Multiple times. Had that gone India's way, then Indians would have been one up. So Indians would have won it 2-0. But it hardly matters. Because I don't think neither team deserved to lose. Because they put up 160, which is not a bad score in any T20 game. And they fought back well. When Indians were trying to trade wickets for runs, they were up to the challenge. So, credit to New Zealand, credit to India. और वो जो आखिरी गेंद थी इवेंचुअली इन हाइंडसाइट ऑफ कोर्स जो मैच की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद थी उसमें वो जो सिंगल भी था हार्दिक पांड्या को ज़बरदस्ती किया वहाँ पे दीपक हुड्डा ने और वो क्विक सिंगल निकाला. आई थिंक वहाँ पे कमेंटेटर्स भी ये बोल रहे थे शायद ये अपनी जेब में कोई शीट लेके घूम रहे हैं बिकॉज डकवर्थ लुइस इज़ वेरी ट्रिकी. जी. डकवर्थ लुइस में अगर आप चेज कर रहे हैं और आपकी विकेट्स गिरती जाती हैं तो आपका जो टोटल है वो बढ़ता जाता है. तो अगर यहाँ पे मैच होता आगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला था क्योंकि डकवर्थ लुइस प्ले में आता और इंडिया ऑलरेडी अपने 4 विकेटें खो चुकी थी वहाँ पे. And in fact, as players, you broadly know what is to be done at what stage of the game, but not ball by ball. No, what happens is that, that you are told that every time you lose a wicket, that means you are exhausting your resources. Yeah. So the DLS system is based on consuming resources or saving your resources. So if India hadn't lost those 4 wickets, Indians were not required to score 75. But if you are losing more wickets, say Indians had lost the 5th or the 6th wicket, then Indians would have been required to score more in the same number of overs, which was over number 9. So that was how it is. So they must have been told that if you're holding on to these many wickets, after every over, if the wicket column, whatever is written there, if that remains constant, you only have to go over by over. But the moment the wicket falls, then the equation will change. That's how it works. But considering कि drizzle लगातार बढ़ता जा रहा था और हर बॉल पे समीकरण थोड़ा थोड़ा बदल रहा था तो एज प्लेयर्स आपका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, टीम की तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है? नहीं, अभी तो टीम की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती थी क्योंकि जो कैलकुलेशंस हैं वो डगआउट में चलते हैं. प्लेयर को जो अंदर खेल रहा है उसको आप मैसेज ज़रूर दे सकते हो बट मुझे नहीं दिखाया वहाँ पे कि कोई मैसेज एक्सचेंज हुआ है वहाँ पे. तो आई थिंक जो भी प्लेयर्स खेल रहे थे वो इंस्टिंक्टिवली अपने उससे खेल रहे थे, जैसा बॉल आ रहा था वैसा वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे. Interesting scenario really because in this series we've seen it all. The first game of course being washed out and then in the second game there was an interruption. Finally in the final game when there was an interruption, it was an impactful interruption because of course the game came to a close with that. Yeah, because see, for me it is like a 3-match series ending at 1.5. Because we didn't have one game and I'll consider this as half a game. So you play 1.5 and India wins 1. So, it comes India's way. But as I said, there are very little takeaways from here. Yeah. I mean, you can get excited about a Surya's, 100, an unbeaten 100 or some spells by the Indians. And that's about it because nothing much has happened. 1.5 games means you don't have to look at much.
But yes, going forward, there are a lot of people who are going to feel a little sad about the fact that they didn't get the opportunity. Yeah. Like somebody like Umran. Umran Malik celebrates his birthday today. And if he had got a chance to play, and he must be looking at the, the analysis of Arshdeep and, Particularly in Siraj. the overs. Siraj and think, oh my God, that could have been me. So for him, it's a sad this thing. Shubman Gill being a specialist opener, not being considered. All And of right, course, then. Let's head to the presentation area straight away. We've got update from there. The hard lane is little bit bounce. It's not easy to bat here. So I prefer to bowl in the hard lane. So When you come to New Zealand as an Indian fast bowler, you must sort of rub your hands together thinking we're going to get some pace, bounce and some swing as well. yeah, exactly. Because I'm preparing the standby in World Cup, so I'll prepare myself to bowl hard length in T20I. White ball is to so much practice. Then I execute on my plan. One thing we noticed today too, when it was coming down to the part of the innings when New Zealand was trying to hit and get on top and they had a good platform, you went to the shorter ball and it really worked for India. Yeah, because my plan is simple. Try to bowl hard length to execute my plan. So that's why my success is. A little bit disappointing that the game didn't go the distance because everyone loves a close and exciting game, don't they? Yeah, exactly. Because it's not in hand because it's the weather. It's the 3 matches is almost is the weather. It's raining. Happy with the win the series. All right, congratulations. What you've won there is a New Zealand Panama as well. That's Tonga in New Zealand. It's a treasure in New Zealand. We hope you treasure it and congratulations on a fine performance today. Thanks. Now, of course, we've had this conversation earlier as well. Mohammad Siraj and the length that he prefers. Hard length, he was preparing for Australia as well, the World Cup, and that's what something that he'd been looking to polish here as well. Shorter square boundaries, but that's how he bowls, is what you mentioned. yeah, because what he was trying to do was, like if you just ask a guy to go out of his, Comfort his zone. prepared lines, it'll be difficult. So what he did was he trusted his instincts. He said, okay, this is what I worked on, and let me just try that. Back of the length, hitting it hard, using the seam, getting the ball to, get that slightly extra or a slightly higher trajectory. And that is what worked for him. Otherwise, the batsmen were giving him the stick. They all were going after him, and it didn't work. And the batsman who goes after every ball, every bowler, that's Suryakumar Yadav. Let's see what he had to say. Went in this series. Well, we better present you with the goods, actually, first and foremost. And Ravi Shastri is the man who's doing it today. Check for $1,000 and a trophy. Thank you for that, Ravi. In terms of, you look like you really enjoy batting. Now, who wouldn't when you were batting like you were in that other game? But were you feeling some pressure on the shoulders today? No, obviously the pressure is always there, but there's no fun in batting when there's no pressure. But yeah, at the same time, what I am carrying from the last few years, I'm just enjoying my batting, just going out there and expressing myself and not carrying any baggage out there. When it comes to the one-day internationals, which we head to now, do you have a very different approach? Can take a little bit of time over there, but I think the intent and the approach will remain the same. Disappointed the game perhaps didn't go to the distance here today because it was looking like an exciting match? Absolutely. I mean, these things are not in under control. We can just go out and express ourselves and just feel that how we are going to play, and that's not in our control. So we would have loved to have a full game, but that's fine. All right, well, congratulations, well played. Congratulations on being the Sens player of the series, Suryakumar Yadav. And honestly, as a cricket fan, I want to see some more of that batting. As a former New Zealander and a New Zealander, perhaps not. But it's been fun to watch. Suryakumar Yadav there, the player of the series, and no surprises there. Of course, his 111 of 51, unbeaten in the previous game, being the highest across the two games. Truncated 1.5 games, should I say. But then coming back to what we'd been discussing earlier, short balls का हम जिक्र कर रहे थे मोहम्मद सिराज के संदर्भ में, बैक ऑफ द लेंथ शॉर्ट बॉल. श्रेयस अय्यर हमने देखा है लगातार इस तरह की डिलीवरी के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, और अब सारी टीमों को पता है एक्सप्लॉइट भी करती हैं. डेफिनेटली आई मीन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है, इतने सारा डेटा अवेलेबल है, स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं.
ओपोनेंट्स रीड करते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा कि अय्यर को यहाँ पे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, चाहे वो एनसीए आए और प्रिपेयर करें उसके लिए, चाहे वो अपने किसी कोच के पास जाते हैं। आई थिंक ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है जब एक कमी आपकी कोई टीम पकड़ लेती है और वो फिर एक्सप्लॉइट होती रहती है। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि सुरेश अय्यर भी वहाँ पे कोशिश कर रहे होंगे उसको काउंटर करने की, बट देखना पड़ेगा कि कैसे उभर पाते हैं इससे। And Rakesh, the problem is not just that he's losing his wickets to short pitch deliveries. For example, in the previous game, he thought the ball would be pitched short and then lost his wicket when eventually it wasn't pitched short. And we've seen that in IPL as well. When anticipating a short pitch delivery, he then gets out. See, probably because he doesn't have the same amount of confidence that he once had. And these things can happen. But trust me, he is a seasoned guy. He's been around long enough. He has played enough of, like domestic, and he can sort it out. So I have immense faith in the way he bats. Probably he's not able to gauge the trajectory of the ball. That is where, and then he hasn't spent much time in the middle. Like today also, he got that first ball, just couldn't get going. So I mean, he couldn't just keep it down. Had to play that ball, and offered a sort of a regulation, sort of a catch in slips, so overall, I mean, I wouldn't read too much into it. Shreyas can get back to this, but then I would like to see him, play hhis role in the ODIs, because he's more suited to play there. He's not in the scheme of things when it comes to India's, the first line T20 squad. He's not in the scheme of things, and he probably knows that. So what he does is he comes to IPL, tries to score big, and then he tries to get noticed again. But in ODIs, I think he's a safer bet. In fact, this season, of course, made the shift to KKR, but struggled against, again, same short-pitched deliveries, that length. But he's pretty good against spin. और उसके बाद पिछले मुकाबले में हमें ये भी देखने को मिला कि स्कूप शॉट अटेम्प्ट कर रहे थे, तो काफ़ी एडवेंचरस भी नज़र आ रहे थे. इंडिया वुड वांट हिम टू डू वेल इवन अगेंस्ट शॉर्ट पिच डिलीवरीज, क्योंकि स्पिनर्स के खिलाफ जो वो बड़े शॉट्स लगाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है. Definitely. I mean, he's an important member of the team, and the way he bats shows that. I mean, he has got class. It happens sometimes you struggle with certain technical issues, but I'm pretty sure that as a player, if I have to talk about, then he will come back and he will work hard and come back, and we would love to see him play in the ODIs, coming up ODIs. इंटरेस्टिंग. और इस बीच में हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ गए हैं. एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स हैं 011-2342-1084, 011-2342-1085. तो जो कॉलर हमारे साथ जुड़े उनसे बात करते हैं. नमस्कार. नमस्कार मैम जी, स्वागत है आपका. मैं सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंतीलाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ. स्पोर्ट सर से निवेदन रहेगा कि क्या वनडे में यही टीम खेल सकती है या चेंजेस होगा इसमें? जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए बसंती लाल जी. एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए. नमस्कार. जी नमस्कार मैडम. जी, स्वागत है आपका हमारे शो में. जी, पहले तो मेरी बातों को सुनना, कॉल काटना मत. जी. तो पहले तो ये कि सर, ये ऋषभ पंत को मैडम क्यों बारी पारी की शुरुआत के लिए भेज रहा है? और दूसरा क्वेश्चन ये है, मैं ब्लाइंड हूँ जी, और इसके अलावा एक क्वेश्चन के बांग्लादेश के साथ जो श्रृंखला होगी इसकी कमेंट्री होगी. जी जी, धन्यवाद आपके दोनों सवालों के लिए. बसंती लाल जी, पहले आपके सवाल का यहाँ पे जवाब दे देते हैं. ओडीआई स्क्वाड के लिए, ओडीआई मैचेस के लिए अलग स्क्वाड यहाँ पे ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है. उसमें कुछ बदलाव हैं जो अभी आप T20 में आपने स्क्वाड देखा. उसमें से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं. नमस्कार. हेलो मैडम, सर, सभी को मेरा बहुत बहुत आदाब. जी, आपको भी आदाब. जी, मैं शेर खान बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से, ये नांदेड़ जिला से. जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है. हम आपके साथ पहले भी आज जुड़े. बहुत बहुत खुशी है मुझे, और मैं ब्लाइंड हूँ मैडम जी, और मैं करीब 30 साल से कमेंट्री सुन रहा हूँ और 30 साल से कोशिश कर फोन लग गया आकाशवाणी जी. तो बहुत बहुत खुशी हो रही है. हमेशा आप कमेंट्री सुनते हैं और आपसे यही गुजारिश है कि हर मैच की कमेंट्री लाया कीजिए आप, ताकि हम
ब्लाइंड लोगों को बहुत बहुत मतलब जो एंजॉय करने का मौका मिलता है जी। और जो भी टूर्नामेंट होते हैं, जो भी सीरीज होती है, तो आपसे दरख्वास्त है कि हर इसका प्रसारण करने की आप कोशिश कीजिए जी। और मेरा ये सवाल है कि वो उमरान मलिक को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। लगातार उमरान मलिक से रिलेटेड क्वेरीज आ रहे हैं कि क्यों प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बनी। इनफैक्ट मिड इनिंग्स में भी और अभी भी जब हमने मेंशन किया कि आज वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो डिस्कस किया हमने उनके बारे में। एक और सवाल जो आया था वो ऋषभ पंत के अराउंड था। अगेन ऋषभ पंत हो टीम में, स्क्वाड में, उनके अराउंड चर्चा तो चलती ही रहती है, अच्छा करे अच्छा नहीं करे तब भी। आज के मुकाबले में जैसे देखने को मिला, 2 बाउंड्रीज बैक टू बैक लगाई और उसके बाद वो अग्रेसिव इंटेंट कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर से विकेट का इवेंचुअली जल्दी पतन हो गया। जिस तरीके से एक ओपनर को बैटिंग करनी चाहिए वो वहाँ पे उनके अंदर वो चीज़ दिख नहीं रही है, बिकॉज इट्स रियली अ स्पेशलाइज्ड जॉब। एंड जिस तरीके से अगर आप टेक्निकलिटीज़ भी बोलेंगे तो डेफिनेटली सबका अलग टेक्निकलिटीज़ होती हैं, सब की टेक्निक अलग होती है, मगर एक ऐसा देख के लगे कि हाँ ऋषभ पंत वहाँ रुकने के लिए गए हैं और रन बनाने के लिए गए हैं, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख नहीं रहा है, बड़ा रस्टी दिख रहे हैं ऋषभ पंत। And that rustiness has continued for quite some time now, particularly in the T20Is. Yeah, that is because I think he tries to go too hard for it. We have seen that even with soft hands, he can place the ball very well and he can use, strength when it is required. But I think he's trying to do he's trying too hard too soon, and he's not getting, into the flow, because he is one of those guys, if he gets into the flow, he's a treat to watch, like most of the stroke makers. But here I think it has more to do with the, a slightly mental aspect. Like she said, very rightly said, that, rusty. Yeah, he's not looking as though he's timing the ball with the ease with which he's known to. So that is, I think, one of the issues there. And also, if you just look ahead to the ODI, I don't think the same experiment is going to take place, because there's no Ishan there, and then of course the captain happens to be an opener. So, and that too a lefty. Yeah. So there is no room there is no room for him to go there and experiment as an opener. So I think he'll come back. And if he stays where he is, that means Sanju Samson may or may not get a chance there. So there are a lot of equations, because somebody wanted to know about the team. Yeah. So I'm just, I'm just adding to that. That there will be a few different combinations when we talk about ODI when we move away from T20s. Interesting. वापस ऋषभ पंत के पॉइंट पर आती हूँ। आज का भी जो डिसमिसल था, that's not something he'd want to look back at because of how he got dismissed. He was trying to charge down and then it was a short pitch delivery. एक बार फिर से पिछले मैच के संदर्भ में भी हमने डिस्कस किया था कि जो वाइडर डिलीवरीज होती हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप, स्ट्रगल करते हुए नजर आए उनके खिलाफ। आई थिंक वो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो अपना बैट स्लाइस कर रहे हैं, जो वाइडर आउटसाइड ऑफ स्टंप डिलीवरीज हैं, तो वो एलिवेशन लाने के लिए वो अपना बैट स्लाइस कर रहे हैं। जबकि अगर वो उसको अगर एक बात को कहते हैं कि छोड़ भी देते हैं, बाकी बहुत जगह है, बहुत स्कोरिंग एरियाज हैं, वो जैसे राकेश ने बोला कि आप स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं। कभी ऐसा होता है कि 2 ओपनर्स में से किसी एक का दिन होता है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने वाला जो आपका प्लेयर है वो अच्छे से खेल रहा है, तो नाउ यू हैव टू शिफ्ट द रोल। आई गेस वो चीज़ यहाँ पे ऋषभ नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपना रोल चेंज नहीं कर पा रहे हैं, एंड ही वांट्स टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग एट एवरी डिलीवरी. And there's another player, of course, who doesn't go all guns blazing, at least at the start, takes his time to get set and then unleashes some very classy strokes, and that's Shubman Gill. ODI, of course, is a format that would suit him really well, because we've seen that he takes time to get his eye in and is a good back foot player as well. See, he is still, I think, in a big way, he's still work in progress. I don't think he's there as a batsman who can take his place for granted. He hasn't cemented it so far. We have seen him in formats which are like, test matches. He struggles. He doesn't look the same. When he gets going, that's why I often say that I don't get influenced by a batsman's best form. It is when he's not going through his best form, how is he dealing with it, and how still he manages to look good. That is the difference between a good batsman and a great batsman. So if he has to first become a good batsman, he has to ensure that
he gives you the confidence that he knows that he's struggling and he's dealing with it. Like Virat Kohli, for instance, for all his greatness, I'm saying this, that he is capable of recognizing the fact that he's not going through his best form. He rotates the strike, he slows down. His first phase of his innings of very slow. This is something that Rishabh has to learn. If the need be, Shubman has to learn that it's okay to score, like run a ball. And then once you get your confidence back, once you get your eyes in, then go hammer and tongs, because you have the strokes. You can play big innings if you stay long enough. But when the going gets tough in the beginning, don't be don't get too flustered about it. Like we saw today, Rishabh was batting as though he wanted everything out of that one over. He had already got 2 boundaries. And he wanted to hit a third one. Miscued it very badly, and I think that choice of stroke was definitely questionable. The way he tried to connect it from where he wanted to, I think that is not accepted. You are a quality batsman. You play red ball cricket so well. Just because it's 20 overs, but you are opening here, so there is a possibility that you could get 50% of the number of deliveries allotted to India. So it's out of 120, you can get up to 60. That's what they say, that when you open the innings, if your best batsman has to get maximum, that means you send him up. But that doesn't, it doesn't apply to somebody who's struggling. You can send a Virat from 3 to 1, not a problem. But you can't pull somebody from 6 to 1 or 2 when he's struggling, and then you expect him to, impress. And that is what we saw in the last 48 hours. Twice we have seen it. This man is struggling. So I think he still needs time. जया, हमने जो मेंशन किया कि वक्त लेने की ज़रूरत है, कुछ बॉल्स पे अगर रन्स नहीं भी आते तो इट्स ऑल राइट, लेकिन एक डाइकोटमी सी है, बिकॉज दूसरे एंड पे ये भी बात हो रही है कि इंटेंट दिखाना है, पावर प्ले में ताबड़तोड़ शुरुआत दिलानी है टीम को, इसीलिए प्रॉब्ली ऐसा नीजर्क रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है. हालांकि वनडे सीरीज आएगी, वहाँ पे वक्त लेने का वक्त होगा. तो उसी संदर्भ में जो हम प्लेयर्स का जिक्र कर रहे हैं, शिखर धवन भी ऐसे प्लेयर हैं जो वक्त लेते हैं, लेकिन एक बार सेट हो जाएं तो फिर वो नहीं पीछे मुड़ के देखते, बड़े रन्स बनाने में और बैटिंग डीपर में विश्वास रखते हैं. Definitely. I mean, Shikhar is a different class altogether, and the way he has proved his mettle, for many years now, I think he'll be a go-to batsman for जो कि इंडिया देखना चाहेगी कि वो फॉर्म में रहें. जी. And in fact, he's a big match player rather, because we've seen how well he does in big tournaments, ICC tournaments in particular. We'd shift our attention a bit to bowling, or should I say all-round skills. And I'm really pleased to mention that in context of Indian team. Shahbaz Ahmed, हम लगातार मेंशन कर रहे हैं कि ग्रूम करने की ज़रूरत है. आईपीएल में हमने देखा, उससे पहले बंगाल के लिए भी हमने देखा है कि किस तरह से क्रंच सिचुएशंस में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. देखिए, शाहबाज का जो यूज़ था, मेरे ख्याल से हम उसे काफ़ी टाइम से भी देख रहे हैं, बात करते हैं, अभी भी मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट कन्विंस नहीं है. हम लोग उनको एज अ फैन, एज एन एनालिस्ट हम लोग जब देखते हैं तो और बात है, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली स्कीम ऑफ थिंग्स में हमारे सीरियसली हैं? मेरे ख्याल से नहीं है. वो आते हैं, फ्रिंज पे रहते हैं, एक आध मैच मिल गया तो मिल गया, मौका मिला, फिर हम भूल भी जाते हैं उनको. तो ऐसे क्रिकेटर्स, जैसा मैंने कहा, जो कि डोमेस्टिक में बिल्कुल मतलब ऐसा कहना चाहिए कि पूरे अपनी जान लगा देते हैं, वहाँ से बड़ी मेहनत करके नोटिस में आते हैं, और फिर जिस हिसाब से उनको ड्रॉप कर दिया जाता है बिल्कुल विदाउट बीइंग गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज़. जैसे मैंने पहले सेशन में भी कहा था कि हमने बहुतों को अपॉर्चुनिटीज़ दे दी हैं, इतनी की शायद ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको वो रिकग्नाइज करना है कि क्या ये इंटरनेशनल क्लास है कि नहीं है. देखिए, क्लास आपको अलग दिख जाता है. अगर आप सिलेक्टर हैं, स्काउटर्स हैं, आपको दिखता है, और अगर आपको नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपके स्किल्स में कुछ कमजोरी है, हमारे सिलेक्शन में या सिलेक्टर्स की देखने के तरीके में उसमें नुक्स है. सीधी सी बात है. अदरवाइज, क्योंकि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, करोड़ों आपको मिलते हैं सालों में, जितने टाइम आपका रहता है टर्म, तो यू आर पेड वेरी वेल, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी ऐसी होती हैं कि आप अच्छा देखें. लेकिन अगर आप मीडियोक्रिटी को अगर आप प्रमोट करेंगे एज सिलेक्टर्स, तो आपके साथ यही होगा. तो यही चीज़ है. बहुत सारे मीडियोक्र क्रिकेटर्स आए हैं जो इंटरनेशनल क्लास कभी थे नहीं. इसलिए देखिए, उनका अगर आप सिलेक्शन में भी निकाल के देखें, पिछले 5 सालों में 3 मैच, 2 मैच, 4 मैच ऐसे ही खेले. उसके बाद उनको मौके दिए भी नहीं गए. फिर अगेन उनको डोमेस्टिक में जाके प्रूव करना पड़ता है कि देखिए साहब, हम अच्छे हैं. संजू सैमसंग जैसे 16 मैच हैं उसके 6 सीजन्स में. तो मतलब आपका एवरेज अगर 21 रन का है
और लोग कहें कि नहीं संजू सैमसन को मौका देना चाहिए, सिलेक्टर्स पीछे मुड़ के आपको वो नंबर्स दिखाते हैं कि हमको सब बोलते हैं कि संजू सैमसन खिलाओ, कैसे खिलाएं उसको, उसके नंबर्स तो देखो आप, जब मौका दिया है उसने डिसअपॉइंट किया है। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है, जस्ट बिकॉज somebody looks good on for one innings or two doesn't deserve a chance immediately, and this I am saying to be very fair to the selectors. उनके पास भी अपने रीजंस होते हैं, सिलेक्टर्स को ब्लेम करना बड़ा इजी है, लेकिन जब आप उनसे कभी बात करेंगे प्राइवेटली और अदरवाइज, जब वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हमने किसी को क्यों लिया और क्यों नहीं लिया, तब एज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो भाई कुछ चीज वो है जो शायद जो मुझे नहीं दिखाई दी जी। तो वही चीज है। तो अभी लोग कहेंगे कि साहब उमरान को हमने मौका नहीं दिया, संजू को मौका नहीं दिया, शुभमन को हमने वैसे ही बिठा दिया है, लेकिन अगर आप हार्दिक से पूछेंगे या लक्ष्मण से पूछेंगे, उनका एक रीजन होगा जो कि हमको अभी उनका रैशनल नहीं दिख रहा है। दैट्स द ट्रूथ। So in fact, there are a lot of variables that come in because we're talking about pure unadulterated talent on one hand, then we're talking about the numbers, and then again what's the requirement of the team at the moment, because there are slots that every team is looking to fill with the youngsters. Quickly, Jaya, आपके thoughts ODI series में आपकी क्या expectations रहेंगी? हमने briefly players पे discuss कर लिया, your thoughts? I think सबसे पहले तो wash out और abandon नहीं होने चाहिए matches. I think tempo is towards India, and but 50 overs is a different ball game altogether, but I think we'll have an exciting series. An exciting series is what we are all looking forward to. An exciting and enriching discussion is what we just had. Thank you so much for your assessment and sharing your thoughts. Thank you. Thank you so much, Megha. We'd be back again with the ODI series after having covered the 3-match T20I series. Make sure you tune in when we come back on the 25th with the first ODI. Hero of the 2020. इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और वीके तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।